Oh, hi. I'm eating my food because I'm going for my haircut. I did my yoga today in the terrace. On my terrace, yeah, private terrace. Because वो नीचे वाला जो setup है ना, that man, I think I just got to know he's a Muslim. So if I complain about him, they will get into the Hindu-Muslim angle. So I don't want to get into that zone at all. उसको loudspeaker से जितना जोर दी गाना play करना है play करे. You don't want to really get into this Hindu-Muslim zone. It's very scary. Because अगर आप किसी की गलती भी point out करेंगे ना उनको, वो religion angle पे चले जाएंगे. So that's the zone. ये मेरे बाल ऐसे हो जाते हैं. So it's time for haircut. I'll talk to you guys later. But let's be positive. अगर मैं US में होती तो US में इतना बड़ा घर यानी पर्ल हाइट्स जितना घर तो आई थिंक वुड बी अ ब्लेसिंग. US में जो होटल्स थे जिनका रेट यहाँ के 5 स्टार होटल जितना था और उनके रूम इतने छोटे छोटे थे कि यहाँ का बाथरूम भी उतना मतलब यू नो इट वाज लाइक दैट स्मॉल. सो लुक एट द पॉजिटिव साइड. Bayal, you have survived in Pearl Heights. So in US, if you even get a place like Pearl Heights, you'll be blessed. You'll be a millionaire. Because इतनी बड़ी जगह US में नहीं मिलेगी आपको. It'll be very very expensive. So God is trying to teach you something. कि अगर आप दूसरी कंट्री जाओ या कहीं और जाओ जहाँ पे लोग थोड़े रैडिकल हो या इधर उधर यू नो जोन के हो तो कैसे उनसे दूर रहने का, भिड़ने का नहीं. बिकॉज वो चाहते हैं कि आप भिड़ो उनके साथ. They want you to engage with them. You understand? And you are not supposed to engage. That's the strength. Okay, now I'm hungry. Bye. हेलो. आप है ना बाजू वाले के उसको बुला सकते हो जो लेडी काम करती है. ठीक है. बिकॉज मैं मुझे भेज दो. हाँ बिकॉज मैं हिंदू मुस्लिम करती नहीं हूँ. आप लोग को लगता होगा. ठीक है. अगर कोई गलत इंसान जिम में गाना लाउड स्पीकर पे इतना डालेगा कि दूसरा आदमी खड़ा नहीं हो सकता तो मैं क्या करूँ. बात आप खत्म हो नंबर गई. भेज दो मुझे. नहीं, अब सवेरे 1-2 पिकअप तो मारेंगे ही, बाकी रात में अब बाकी बड़ी रात होगी ना तो ये While driving. Awesome. चलेगा रूम पर. हाँ So I've put a toner right now. And the thing is, बहुत सारे लोग you know they want to label me as the wrong person, but I have to defend myself and take a stand for myself. So that is why I told my husband to make that call, because apparently हमारी neighbor की servant ने हमें कुछ 4-5 missed calls दिए थे. So I just thought we could talk to her because I don't want to talk to any women directly. No, I don't want to get in that zone. Acha. But apart from that, it's not about staff and labor. Let's not talk about staff and labor. बहुत हो गया यार. Neena Gupta ji, she looks so pretty. She looks so good. I tell you, the best thing about her is that she has been able to make a comeback on her own terms. उनके लिए roles लिखे जाते हैं. Do you understand? Roles are written according to her, which is great. I think that's great for any Indian woman actor. तब्बू ने भी इतना नहीं, you know, इतना respect नहीं मिला when it comes to offering her roles. Right now, I think she did a film with some flight film with Kareena and Kirti, where she was having a good role. But Neena Gupta ji at her age has made such a great comeback that it's amazing. Yeah. Okay. Bye.
just got to finish my emails and stuff like that because I'm concentrating on something else right now. I'm not concentrating on business at all. No, that's not my zone. So now my hair is tied up. It's been done really well, but I had to tie it because I'm in a taxi. And the moment I came out, there was this PR activity happening with Sara Ali Khan, and I was like, okay, but that's okay. You know, you just go with the flow because मैंने किसी PR को तो बोला नहीं था ना कि मैं यहाँ पर हूँ. So yeah. I'll show you my hair once I reach my house. Got it. I even met Vivek Agnihotri's wife, Pallavi Joshi, and I exchanged my number with her because she is a producer and they do good work. So I did that. Got it. और मैं टैक्सी में थी बिकॉज मैंने संग्राम को बुलाया नहीं एंड तो मैं अभी जा रही थी. तो ये वही जगह है जहाँ पे आप लोगों का ये जो राइट विंग का PR होता है ना कि मीडिया वालों को बुला लेते हैं और सब खड़े हो जाते हैं पागल की तरह और फोटो खींचते हैं मैडम मैडम मैडम. तो वही जगह थी. सो इनफैक्ट मुझे वो विवेक अग्निहोत्री की वाइफ मिली पल्लवी जोशी. तो मैंने उसके साथ नंबर तो एक्सचेंज कर दिया. ठीक है. एंड फिर मुझे अभी मैं निकल रही थी तो आई थिंक आई सॉ श्वेता बच्चन. But I cannot just go and start talking to people. She goes there only. I have seen her come out from there always. Yeah, so but I can't just go on, you know. Shweta comes out from there only. Yeah, so but everybody has their own space, no? So you just can't barge inside people's spaces. No, that way no. Connected person के साथ connection कर सकते हैं. If you leave the Pearl Height and move out only, you can get ना connection. हाँ. वहाँ बैठ के. हाँ, तो मैं निकल रही थी. मैंने टैक्सी को बुक किया और सारा अली खान आ रही थी. तो वो जो PR वाले होते हैं ना वो सब वो गेट के ऊपर खड़े थे, यू नो, लाइक क्रेजी. सो इट वाज सो फनी. दे वर लाइक अंडर द ब्रेथ सेइंग पायल रोहतगी, बट उनको फोटो खींचनी थी सारा अली खान की. सो इट वाज सो फनी. बट आई जस्ट पुट ऑन माय मास्क एंड आई सैट इन द टैक्सी बिकॉज you can't. It is. There was no talk with you. No, because what happens is that they are paid for a particular star, no? Yeah. So they will behave as if that is only that star, and they will try to behave as if the other person is not existing, though they know she is existing. Yeah. They are weird, yeah, Mama. It is a very weird game. You understand? So this is the game, na, that people get this thing. क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स्ड. बिकॉज जब उनका PR नहीं होता तो दे सडनली फील स्टूपिड कि शायद मुझे लोग पहचानते नहीं है. बट द बॉटम लाइन इज लोग पहचानते हैं. वो चाहते हैं कि तुम स्टूपिड फील करो. तो मैं तो सबके सामने PR होता तो it makes a little difference. हाँ, बट मम्मा अगर PR भी अगर इन लोगों का कंट्रोल्ड है तो मैं क्या कर सकती हूँ? थोड़ा बैठ के इनको पैसे दो जब तक ये लोग काम नहीं लाते. क्या मालूम किसके थ्रू जहाँ कंट्रोल नहीं हो you get one fine day. ऐसी बात भी नहीं है. हाँ, so a work has to come and then you take your cut, your commission, ना. मैं बैठ के थोड़ा इनको मंथली सैलरी देने वाली हूँ. नहीं, work comes, take your cut. Work comes, take your cut. Yeah, work comes, take your cut. It works like that only, no? Because you are not going to be keeping anybody. Against work you can pay, na? You just can't pay from your pocket. Yeah, so it was very hilarious because I was expecting some time pass drama to happen, but it was so hilarious that I was like, fuck it, I'm going to sit in Uber ka go only in front of them and I'll put my mask and I'll walk. ये मुझे क्या stupid feel कराएंगे? मैं इनको ना stupid feel कराऊँ. ठीक है, कोई बात नहीं. You have to. This is part of the stage which is creating changes for you. Yeah, it is a transition phase. So the transition phase has to be dealt with. Yeah. Yeah, how you deal with it? Number 9 का बहुत कुछ मैंने 2 जगह पढ़ा था तो तुझे भेजा कि that changes will come this year and don't worry.
say positive things in the universe, things will change for you. So I'll go Yeah, home and I'll call you because my hair. So this guy has done a good job. Yeah. He has done How a much good. they charge here? 19 he charged. Okay. He was reasonable as compared to Amanda. And ये क्या है? It's nearby the house. You understand? So आदमी हाँ. 10 बार जा सकता है कुछ भी कराने के लिए. Close by for little things also you can go. Amanda, you have to plan so much and go. And the thing is, it's too much of a travel यार. Bandra कौन जाए इतना दूर? It is too much of a travel. और सारा अली खान की एंट्री हुई. वो मेरे को पूरा क्रॉस करके गई. But it was very funny. सारा अली खान या सारा खान? सारा अली खान. मतलब ये इसकी सैफ अली खान की लड़की. या और उसने चश्मा पहना था और मैं अलग थी तो वो अपने जोन में थी. बट और वो सारे मीडिया वाले खड़े थे वहाँ पे. एनीवेज मुझे अपने बाल की फोटो लेनी है. So that's my hair. It's looking lovely. Awesome. Look at this. Look at this. Yeah, baby.